डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लोगैरिथम के बारे में बात करेंगे एंड वी लर्न द मीनिंग एंड हाउ टू यूज द लॉग टेबल एंड व्हाई इट इज नीडेड। सपोज आपके पास ये एक मल्टीप्लिकेशन करना है 51 दिस नंबर। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि इस मल्टीप्लिकेशन को टाइम लगेगा एंड गलती होने के भी चांसेस है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। आपको एक मल्टीप्लाई करना है 8 इंटू 4, आंसर इज 32, जो कि आपको इजी है क्योंकि दोनों छोटा नंबर है। बट सी, आई कैन डू दिस मल्टीप्लिकेशन विदाउट रिमेंबरिंग द टेबल ऑफ 4 और 8 यूजिंग दिस मेथड। सी, 8 ऑल्सो कैन बी रिटन एज 2⁻3। 2⁻3 का मतलब क्या है? सो लेट्स सी हियर, 2⁻3 मीन्स 2 into 2 into 2, which is 8, and 4 can be written as 2⁻2. So now what I have done is I have converted these two numbers into an exponential form whereby the base is the same. दोनों के base क्या है? 2 है। Now we have a rule where हम लोग बोलते हैं कि अगर base same है, I can just add up the exponents. So 2 into 2⁻3 into 2⁻2 is 2⁻5. And 2⁻5, if you multiply 2 5 times, you'll see that the answer is back to 32. So what I am trying to tell you here is, if I have a method कि इसको मैं 2 कुछ एक नंबर पे डाल सकूं, let's say x. Right now I don't know the value of x. Into, and this value can be written as 2⁻y. अगर मुझे इसको ऐसे लिखने आएगा, and if I know the value of x and y, this multiplication becomes very easy because the answer is 2 into x plus y. So let's see here. So I want to do this multiplication. Now right now आप लोग ये ना पूछे कि हमको कैसे मालूम कि ये इतने के बराबर है। वी विल फाइंड आउट। बट इफ यू अज्यूम दैट दिस इज इक्वल टू दिस 2 दिस मच एंड दिस इज इक्वल टू 2 दिस मच। नाउ रिमेंबर, दोनों बेस सेम हो गए, सो आई कैन ऐड अप द एक्सपोनेंट्स। एडिशन इज ऑलवेज ईजियर। द आंसर ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन इज दिस मच, 2⁻15.38. बट again, this is not the form in which you want the answer. You want the answer in this form. So हम लोगों को इस नंबर को भी दोबारा एक नॉर्मल नंबर पे कन्वर्ट करना आना चाहिए। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, हम लोगों को किसी भी एक नंबर को वी शुड हैव अ मेथड टू कन्वर्ट इट इनटू सम बेस रेस्ट टू समथिंग। सी नाउ यहां पे हम लोगों का 2 हुआ, बट आई कैन डू इट फॉर 3 ऑल्सो, रिमेंबर, बिकॉज माई कंडीशन इज दोनों के बेस सेम होना चाहिए। सो ऑब्वियसली दिस नंबर विल नॉट बी 5.6 देन दिस नंबर विल नॉट बी 9.7। लेकिन अगर ये नंबर आपको मालूम है, आई कैन अगेन डू दिस एडिशन एंड आई कैन गेट माई आंसर एज 3 टू सम नंबर which I should convert back to a normal number. So this conversion of a normal number into an exponent term, this is the meaning of taking log. So when I say I want to convert this number into 2 something, बेसिकली आपको क्या करना है? यू आर टेकिंग log of 51.234 to the base 2. So this number comes here. So if you have a log table of base 2, अगर आपने इसका log लिया तो आपको ये आंसर आएगा।
लाइकवाइज अगर हमने इस नंबर का log टू द बेस 2 लिया तो मेरा आंसर जो आएगा ये आएगा. एंड देन we do this, एक समीशन आ जाएगा. we have this number, but I have to put this, convert this back to again this number. I have to take an anti-log of the base 2. Again I have told you this before, हम लोग को log 2 लेना ही जरूरी नहीं है, log 3 भी ले सकता हूं मैं. देखो मैंने क्या किया. how do I get this 3.5? so 3.58 is nothing but log of 51.234 to the base 3. This answer will give you 3.5831. So I can say that this number is equal to 3 raised to this number. Again this number is converted to this using a log table of base 3. You get this number. फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको नॉर्मल नंबर पे कन्वर्ट करने के लिए आई यूज एन एंटी लॉग ऑफ लॉग टू द बेस 3. आपको जो लॉग टेबल दिया जाता है आपके जो बुक्स में या लॉग टेबल जो होता है, दैट इज लॉग टू द बेस 10. सो व्हाट डज दिस मीन? सो इफ आई टेक लॉग ऑफ 51.234 टू द बेस 10, यानी अगर हमने ये लॉग टेबल निकाला, व्हाट आई एम फाइंडिंग इज जो भी नंबर आएगा, सपोज लॉग ऑफ 51.1 इज xx. सो व्हाट दिस मीन्स इज 10 raised to xxxx इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस. इसका मतलब ये है. सो लेट्स सी log of, so how do I get this 1.7096? What I do is I take log of 51.234 and log to the base 10. I get this 2.92 by taking log of this in a log to the base 10 table. You get this number. Then you convert this back to a normal number by taking an anti-log of log to the base 10. मैथ्स में हम लोग इसके अलावा सी रिमेंबर माई कंडीशन इज, इस रिलेशन को यूज करने के लिए माई कंडीशन इज बेस सेम होना चाहिए. इट रियली डजेंट मैटर कौन सा बेस है, 2, 3, 10, ई कोई भी नंबर. लेकिन हमारे पास ओके नाउ this is equal to e to the this and this is equal to e to the this, where e is a number 2.718. so again you take an anti-log of this, you get this number. And if we use our normal method and see this multiplication, the actual number is this much. So you can see that using log table the answer is not so bad. So it is a good approximation, and the point is it is much faster. तो हम लोग ने लॉग का टेबल निकाला. ओके लॉग, अब एज आई टोल्ड यू हमारे पास लॉग टेबल इज अवेलेबल फॉर लॉग टू द बेस 10. सो वॉट एवर हम लोग जिस नंबर का भी निकाल रहे हैं, रिमेंबर आई एम गोइंग टू फाइंड आउट 10 raised to what number is equal to log of that. Before that let's see something. I know that 10 raised to 0 is 1. Anything raised to 0 by the way is 1. 10 raised to 1 is 10. 10 raised to 2 is this. And likewise 10 raised to minus 1 is 0.1, minus 2 is 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. This table continues this side also, and obviously this continues this side also. Okay, so now हम लोग log of 51.234 log table पे निकालते हैं. But as I told you, now if I want to see, हम लोग log निकाल के क्या कर रहे हैं, I am going to find out this value of x. Now let's see without using a log table इस x का वैल्यू क्या होगा. Now I am going to write that 10 raised to x is 51. इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे 10 raised to 0 is 1, 10 raised to 1 is 10, 10 raised to 2 is
100. So if I want to say 10 raised to x is equal to 51, don't you agree this x will be a number between 1 and 2? Because 10 raised to 1 is 10. 10 raised to 2 is 100. Now I want a number where 10 raised to x is 51. अब 51 जो है इन दोनों के बीच का है, यानी 10 से बड़ा है, 100 से छोटा है. सो 10 raised to x अगर हुआ, x will have a value which is greater than 1, क्योंकि अगर 1 होता था वो 10 के बराबर होता था, एंड इट विल बी लेस देन 2, क्योंकि 2 होता था तो वो 100 होता था. सो द वैल्यू ऑफ दिस x will be 1 point some number. I hope this is clear. So x will be equal to 1 point. I don't know what these numbers are. ये हम लोग थोड़ी देर में करेंगे. Likewise, now इसका हम लोग को 10 raised to x निकालना है. Now remember that this number is greater than 100 and less than 1000 over here. Greater than 100 and less than 1000. So the number x will be greater than 2 and it will be less than 3. So it will be 2 point some number, 2 point something something. Now let's take a small number now. Is 0.008. Now let's try to find this in our 0.008. यानी ये नंबर इन दोनों के बीच में होगा 0.008. यानी तुम्हारा x का जो वैल्यू है -4 से बड़ा होगा, -3 से छोटा होगा. सो दैट नंबर शुड बी now instead of writing minus, why I am writing 3 bar. हम लोग ये थोड़ी देर में देखेंगे. So what it means is, so this number before the decimal जब आप एक log लेंगे is called the characteristic, and this number xxxx is called the mantissa. So if I want to find out 8.2 this of log 10, x is, we have already seen, it is between 2 and 3. So the easiest way to find out this characteristic is, see, as I already told you, if you have a characteristic of 2, no, this is not correct, x is not, okay, characteristic हम लोग कैसे निकालेंगे? What you do is you move this point towards the left. If you move towards the left, it is positive. If you move towards the right, it is negative. So you can see here that point moves 1, 2, 3, 4, 5 places. So it is, characteristic is 5. Over here the point, if I want to put my point after the first natural number, not 0 is not counted, जो एक natural number है उसके बाद रखना है. तो यहाँ पे मैं point को इधर लेके आया तो मुझे I have to move 1 place towards the right. So the characteristic is -1. Over here I have to move 1, 2, 3 towards the right. So it is -3. Okay, अभी हम लोग, we are done with the characteristic part, and let's see how to find out the mantissa part. So now you want to find out the 51.234 का log to the base 10, और आपके पास जो log table रहता है वो log to the base 10 ही रहते हैं. So now यहाँ पे ये जो you see this number, it starts from 10 and it goes right up to 99. So यहाँ पे 50 है, इसका मतलब there should be one more page of this periodic this log table. तो अभी हम लोगों को 51 का ये निकालना है. What is the characteristic? I have to move 1 towards the left. So it is 1. So it is 1 point something. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? We'll take the first 4 digits. ये 4 digits लेंगे. We'll look under 51, under 2, under mean difference of 3. So 51 कहाँ पे है? यहाँ पे है. Remember 51, and this number always starts from 0. Remember. So if you want to look at 2 over here, this should be the third number, not the second number, because this is 0, this is 1, this is 2. So we are going to look at this number and the mean difference of 3.
mean difference of 3 is this number. So you add this number 7093 plus 3, so it should become 7096. So we look at 51 under 2 under mean difference 3, add किया तो, so the characteristic is 1 and after decimal your mantissa is 7096. Just to repeat, what it means is, if I want to convert this number, इसका मतलब क्या है? Remember, this is a log to the base 10. यहाँ पे भी लिखा है base 10 लिखा है. So what it means is 51.234 can be written as 10 raised to 1.7096. Like this. 10 raised to this number is equal to 51.96. तो मैंने पहले पेज में बताया था कि I want to convert this number into a form whereby I have a known base. Remember, हम लोग common base 10 ही use करेंगे. Again, I want to find this number, इसका log. So I have to look under 36, 5 and 1. What will be the characteristic? Characteristic will be, I move 2 towards the left hand side, so it should be 2. So 2 point something. 2 point. So 36 under 5 under 1. So I add these numbers, so this becomes 5624. So the answer is 2.5624. Again, please remember what's the meaning of this. Characteristic is 1. Characteristic 1 है, इसका मतलब है जो नंबर है वो 10:1 और 10:2 के बीच में, between 10 and 100. 10 यहाँ पे characteristic 2 है, मतलब this number is between 10:2 and 10:3, यानी 100 और 1000 के बीच में, which is 365. That's fine. So now let's do some examples. Okay, I want to do this multiplication. तो अभी हम लोग ने देख लिया था कि इसके log निकाले. So we can write this number as 10 raised to this into 10 raised to this. अभी दोनों के base same हो गए. I add these two numbers, so this is this number. But then again, this number is not very useful because I want the number back, normal number. उसके लिए हम क्या करेंगे? हम लोग एंटी लॉग लेंगे. एंटी लॉग हम लोग कैसे लेते हैं ये बताइए. एंटी लॉग में हम लोग पॉइंट के बाद का नंबर देखेंगे. We never look at the antilog of the number before the point. So I have to look at antilog of 0.27 under 2 and 0. Not 42. I should look at 0.27. Now this is an antilog table. लॉग टेबल याद रखो तो आपने 10 से शुरू किया था, 99 तक गया था. एंटीलॉग में यू स्टार्ट विथ 0.00. देयर इज अ पॉइंट हियर, सो विच मीन्स हम लोग को पॉइंट के बाद का नंबर देखना है, ना कि पहले का नंबर देखना है. सो लुक एट 0.27. यू कैन सी हियर 0.27 इस लॉग टेबल इस पेज पे नहीं है. सो विल गो टू द नेक्स्ट पेज. ये रहा मेरा 0.27. हम लोग क्या करेंगे? 0.27 में देखेंगे. ये रहा 2 देखेंगे. 2 किधर है? अगेन ये 2 है एंड 0 इज 0. सो 27 2 0. आई एड दीज टू नंबर्स. क्या मिला? 1871. सो आई हैव टू जस्ट राइट दिस नंबर. सो एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर इज 1871. लेकिन अब इस 4 का क्या करना है, क्योंकि ये 4 तो मैंने यूज किया ही नहीं. सो व्हाट आई डू इज, आफ्टर आई राइट दिस नंबर, आई पुट द पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नेचुरल नंबर एंड यहां पे जो भी नंबर है दिस गोज एज 10⁻⁴. This is the antilog of this number. So the multiplication of this number is equal to this. Obviously I can convert this. This is 10,000, so I can multiply this by 10,000 and I will get a normal number. So let's just see what is then. Yeah, it is written like that. ये point कैसा कहाँ से आया समझ में आया. ये 10⁻⁴ यहाँ से आया. This number is this. And if you do this multiplication using a calculator, you get this number, which is close enough. Okay, let's do this multiplication again. Another example. We're going to solve 2 more examples. 0.345.
इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? नाउ आई हैव टू मूव वन प्लेस टुवर्ड्स द राइट, सो कैरेक्टरिस्टिक विल बी -1. इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? पॉइंट यहाँ पे है 1 2 3, सो इट विल बी 3 पॉइंट समथिंग. अब इसका आगे का नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे? बाय लुकिंग एट द लॉग टेबल. सो दिस इज 1 bar point this and 3 bar point y. I have to find out the value of x, y using a log table. तो आप लोग log table में देखते हैं. Let's go to the log table. So I have to look at 32, 5 and 4. 32, 5 and 4. तो हम लोग जब log लेते हैं तो point is not a, it makes no difference because point just give you the characteristic. I have to find out the first natural number and वहाँ से पहले 4 नंबर लेना है. एंटी लॉग में हम लोग हमेशा बाद का नंबर लेंगे. सो इट इज 32 this, so it is 5119. if I add this 5 to this number, so this becomes 5124. so it is 1 bar 5124, 1 bar 5124. अब इसका क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक इज 3. अब हम लोग क्या करेंगे? 39 का 7 और 6 देखेंगे. 39 कहाँ है? ये है. 7 ये होगा, 6 ये होगा. So I add these two numbers, so this becomes 5995. So this number is 3.5995. Up again, what this means is, please remember, this just means that it is 10 raised to 1 bar 0.5124 into 10 raised to 3.535995 जो भी है. But remember, I need to add these two numbers. अब in addition में there is a complication here. Now I have written bar here. So what it means is, bar का मतलब क्या है? Why didn't I write minus over here? Because what this means is, this part is minus but this part is plus. Obviously यहाँ पे ये भी प्लस है, ये भी प्लस है. So क्योंकि अगर इसके जगह पे मैंने ये माइनस अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता था, what it would mean is it is -1 and this also will be minus, जो कि गलत है. this number is minus, this number is plus. so when I add, I cannot just add them सीधा साधा because I know that this is minus, this is plus. so I have to break this. so this becomes -1 plus 5 to 4. ये अब ये तो ठीक है क्योंकि दोनों प्लस है तो प्लस प्लस किया, सबको ऐड किया तो मेरा आंसर क्या आ गया? 3.119. सो नाउ दिस नंबर इज अ नेगेटिव. नाउ अब इस व्हाट दिस मीन्स इज दिस नंबर इज इक्वल टू 10 raised to 3.1119. बट आई वांट अ नॉर्मल नंबर फ्रॉम दिस. तो हम लोग क्या करेंगे? अब एंटी लॉग लेंगे. एंटी लॉग किसका लेंगे? रिमेंबर, पॉइंट के बाद का नंबर है 0.11 1 और 9. जो भी नंबर आएगा 1 2 3 4, हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट यहाँ पे डालेंगे एंड दिस विल गो एज इनटू 10 raised to 3. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. इसका एंटीलॉग लेना है तो हम लोग क्या करेंगे? 0.11 इधर है, 0.11 है, 1 के नीचे 9 ये करेंगे, 3 को इधर ऐड किया, सो दिस बिकम्स 1294. सो माई आंसर दिस इज 1294. देन व्हाट डू आई डू? यहाँ पे पॉइंट डालता हूँ इंटू 10 raised to 3. सो ऑब्वियसली 10 raised to 3 करेंगे तो यह नंबर इधर आ जाएगा. So it should be something like this. Let's solve the last example and this will help you. Okay, so this number is this and the actual number is 1293.79. So the number is quite close. Now let's do this number. तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसका लॉग लेना पड़ेगा, इसका लॉग लेना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा और उसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा. सो व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक हियर? इट इज 1 2 3. So it will be 3 bar point something and this will be, it doesn't have to move, so it is 0.
So 3 bar point something something, and this is 0.yy. xx और yy का वैल्यू हम लोग लॉग टेबल से निकालते हैं. So 32, 5, 4. 32, 5 and 4. 32, 5 and 4. तो इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ जाएगा? 5 को इधर ऐड किया तो दिस बिकम्स 5124. सो द लॉग ऑफ दिस इज 3 बार 5124. 3 बार 5124. अब इसका क्या होगा? इट हैजंट मूव्ड, सो द कैरेक्टरिस्टिक इज 0. रिमेंबर कैरेक्टरिस्टिक 0 का मतलब है कि दैट नंबर इज, जिसका आप लॉग ले रहे इट इज बिटवीन 10⁻0 एंड 10⁻1. सो जो कि ठीक है, 10⁻0 इज 1, करेक्ट, 1 एंड 10 जो कि 3 है, इज ओके. और वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? 3976 करेंगे. 3976. इस 7 को इधर ऐड करेंगे, सो दिस बिकम्स 5995. सो दिस नंबर इज 0.5995. obviously I have to add these two numbers. now the problem is again, जैसे पिछले में इसका कहा था, इसको ये माइनस है, ये प्लस है, यहाँ तो ठीक है, यहाँ भी ये भी प्लस है, तो इसको ऐड करते समय मुझे तोड़ के ऐड करना पड़ेगा. सो दिस इज -3 प्लस दिस and plus this, and if I add all this number is equal to -1.881. but the problem is I cannot take the antilog of this. why? Because over here this number can be written as -1 minus 0.8881. so what it means is your mantissa is negative here, so mantissa cannot be negative. that's why this should be written in the form of something bar point something. तो इसको हम लोग पॉजिटिव कैसे करेंगे? लेट्स डू दिस. सो दिस नंबर इज दिस, सो रिमेंबर दिस इज अ माइनस नंबर. तो हम लोग इसको करेंगे कैसे? ऑल आई डू इज ऐड 1 सब्ट्रैक्ट 1. अब ये क्या हो जाएगा? -1 और -1 मिला के -2 हो जाएगा, और +1 और ये नंबर मिला के एक पॉजिटिव नंबर है. जो भी नंबर आएगा, सो आई कैन राइट इट एज 2 बार पॉइंट सम पॉजिटिव नंबर. ये मिला के 2 बार हो जाएगा, and this will be a positive number. so 2 bar -2 and plus this. now this is minus, this is plus, so this can be written as 2 bar 0.1198 1119. अब इसका एंटीलॉग निकाला जा सकता है क्योंकि ये आप पॉजिटिव नंबर है. तो एंटीलॉग में क्या देखना पड़ेगा? 0.11 के 1 के 9 के नीचे. 0.11 1 and 9. ये 3 है, इसको ऐड किया तो क्या नंबर आ जाएगा? 1294. so let's write down the answer of this is 1294. then what do? I put the decimal after the first natural number and into 10 raised to what? 10 raised to the characteristic, which is -2. so this will be, so yeah, it is like this. so it is this number, and thank you very much. I hope this was helpful. Thank you.